Okay, so good morning students. In the last class, we have already discussed about the respiratory system. So let us see again from the beginning. In case if you forgot about this topic. तो अभी हम लोग रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे. मैंने ऑलरेडी लास्ट क्लास में ले लिया था, लेकिन फिर से एक्सप्लेन करेंगे अगर बाय चांस अगर भूल गया वो सब. So what do you mean by respiratory system? Respiratory system, it mainly means that when you breathe in oxygen and when you expel out carbon dioxide. And here what usually occurs in the human respiratory system, here the lungs plays an important role in the human respiratory system. And here what happens, here usually exchange of gas happens, that is exchange of carbon dioxide and oxygen. Exchange of carbon dioxide and oxygen usually takes place in this respiratory system. तो हम लोग को रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या मिलेगा, यहाँ पे दो गैस एक्सचेंज होता है, वो है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड. और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे मेनली लंग्स जो है ये मेनली रेस्पॉन्सिबल है हम लोग का रेस्पिरेटरी सिस्टम मतलब प्रोसीड होने के लिए, मतलब आगे जा सके. ठीक है, डिड यू अंडरस्टैंड? Did you understand this first slide? Ma'am. Okay. Okay, next is you will find that in the respiratory system there are two types of respiration. That is known as external respiration and the other is internal respiration. So these are the two types of respiration that you will find in the respiratory system. So here what usually happens in the external respiration means what? When the gases are being taken up, okay, that is what? Breathing out. So when you breathe out, what happens? Exchange of gas usually occurs. That is in between your lungs and the blood. And here what usually happens when you breathe out, what happens? Your chest, it will contract. I mean what? Your chest, it will become small. And your diaphragm, this is your diaphragm, it will relax. It will start relaxing. So यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे मोस्टली एक्सचेंज ऑफ गैस होता है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन पे. यहाँ पे दो गैस मतलब एक्सचेंज होगा, वो है कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन. और यहाँ पे ब्लड और जो लंग्स है, यहाँ पे इन दोनों के बीच में वो होता है, संबंध होता है. ठीक है. और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो चेस्ट है, छाती है, वो कंट्रैक्ट हो जाता है, मतलब अंदर आ जाता है, छोटा हो जाता है. और ये जो डायफ्राम है रिलैक्स हो जाता है, थोड़ा आराम मिलता है उसको. और नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट इज ब्रीथिंग इन, दैट इज आल्सो नोन एज इंटरनल रेस्पिरेशन. So what happens again here, same thing, exchange of gas happens in between your blood and your cells. And what happens here, the chest, it will expand, it will grow in size. The chest it will grow in size. And what happens here, the diaphragm, this is your diaphragm, the diaphragm also it will contract means what? It will become smaller in size, this diaphragm. So these things happens internal and external respiration. Is it clear, everyone? Ma'am. Next is upper respiratory tract. So in the upper respiratory tract, what will you find? You'll find mouth and nose. So this is mouth and this is your nose. So what happens here? Inside your mouth, in the nose, what happens? The air will enter inside it, so that they will go and give it to the lungs.
Understand? So that they will go and give it to the lungs. From the nose and the mouth, the air enters inside it. तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में हम लोग को पहला ऑर्गन्स क्या मिलेगा, माउथ और नोज। माउथ और नोज पे क्या होगा, माउथ और नोज के अंदर हवा घुस जाएगा और कहाँ पे चला जाएगा, लंग्स के अंदर चला जाएगा। तो लंग्स के अंदर जाने के लिए ये जो नोज है और जो माउथ है अंदर मतलब काम करते हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट इज नेजल कैविटी। दिस इज द नेजल कैविटी, इट इज ऑल्सो नोन एज nasal passage. So in the same, you will find the same thing. So what will you find? The air will enter inside the nose and will enter into the nasal cavity or else nasal passage, so that it will go and enter inside the lungs. This one. Is it clear? तो नेजल पैसेज नहीं तो फिर नेजल कैविटी में क्या Yes, ma'am. मिलेगा, सेम थिंग होगा, मतलब जो नोज नोज के अंदर, मतलब नोज से जो हवा आएगा तो ये नेजल पैसेज या फिर नेजल कैविटी के अंदर चला जाएगा और कहाँ पे चला जाएगा, लंग्स के अंदर चला जाएगा, ठीक है। तो यही है। सो डिड यू अंडरस्टैंड दिस माउथ एंड नोज एंड नेजल कैविटी? यस। Ma'am, explain again. Okay. So in the upper Ma'am, respiratory can you tract, explain again? yeah, I'll repeat again. So in the upper respiratory tract, it is in the upper side. What will you find? First, you will find nose and mouth. This is this one. This is the nose, and this is the mouth. So what happens here? The air enters inside this. That is the mouth and the nose, and so that it will go and it will enter into the lungs. This is the lungs. So in the lungs, what happens? Exchange of gas happens, is not it? So for the air or the gas to enter, they have to take in the air. It's not it. So for that, the nose and the mouth, they are responsible. Means they are the first one who receive the air from the outside world, so that they can enter into the lungs and they will like function normally. Is it clear? तो पहले में क्या मिलेगा अपर Yes, रेस्पिरेटरी ma'am. ट्रैक में? Yes, ma'am. ओके, तो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक में क्या मिलेगा, पहले पहले तुम लोग को नोज और माउथ मिलेगा। तो ये पहला दरवाजा है, बोल सकते, पहला वे है जो मतलब हवा अंदर लेके आते हैं ताकि लंग्स पे चला जाए और अच्छे से फंक्शन करे, ठीक है। नोज और माउथ पहले, उसके बाद नॉस्ट्रल्स, ठीक है। उसके बाद कहाँ पे चला जाएगा, उसके बाद नेजल कैविटी। ये नेजल कैविटी है, नेजल पैसेज भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे जाके ऐसे ऐसे चला जाएगा लंग्स पे जाने के लिए। सो इट विल गो लाइक दिस, अंडरस्टैंड, सीरियल वाइज यू कैन से, इट विल गो सीरियल वाइज सो दैट इट विल एंटर इनटू द लंग्स। सीरियल वाइज अंदर घुस जाएगा ताकि लंग्स के अंदर जाने के लिए, ठीक है। समझ में आया? Yes, ma'am. Okay. Okay, next is sinuses. So these are the sinuses: frontal sinus, ethmoid sinus. This is maxillary sinus. This one. This one is the maxillary sinus. This one is also known as maxillary sinus, and this is the sphenoid sinus. So these are the sinus that you will find in the upper respiratory tract. तो ये जो सारे साइनस है, फ्रंटल साइनस है, इथमॉइड साइनस है, मैक्सिलरी साइनस है, दोनों साइड में मिलेगा, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, और स्फेनॉइड साइनस। तो ये जो साइनस जो है ये अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में मिलता है, ठीक है। तो what happens here in this upper respiratory tract, I mean in the sinus, there is a hole in between the bones in the head. Understand? There is a hole in between the bones. Means what? Here there is a hole in between the
between the head, and when it will enter, when the air from the outside world, it will enter into the sinus. What will happen? There is a hole. It's not it. So inside the hole, when it will enter, what will happen? Humidity. You will find humidity. I mean, the temperature will become humid. Understand? It will become the temperature as well as what? As well as the water vapor, the air, whatever you breathe in, the gas, whatever you breathe in, they will make it tolerable, so that you will be able to tolerate the gas, so that you will be able to tolerate the vapor. If it is too windy, too cold, and all, what will they do? These sinuses, they will help in humidity. I mean, they will keep in maintaining the temperature. They will help so that you will be able to tolerate it. So in this case, the sinus will help you in it. तो यहाँ पे क्या होगा जब हवा अंदर घुस जाती है एयर, ये छेद के अंदर, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ह्यूमिडिटी होगा। ह्यूमिडिटी मतलब जो टेम्परेचर जो बाहर से आया है, जो बाहर से जो टेम्परेचर आया है, वाटर वेपर बोलो, गैस बोलो, एयर बोलो, ये मतलब हम लोग को मतलब सहन कर सकने के लिए हम लोग का मदद करते हैं। ठीक है, मतलब इतना गर्म भी नहीं, इतना ठंडा भी नहीं, ये मतलब टॉलरेट टॉलरेट ताकि हम लोग टॉलरेट कर सके, ताकि हम लोग सहन कर सके, ये मदद करते हैं साइनस। इज इट क्लियर? Ma'am, explain again. Okay. So what happens here in this sinuses? Sinuses you'll find here. It is a frontal sinus, ethmoid sinus, maxillary sinus, and this is a sphenoid sinus. So what happens here? In the sinuses, you'll find that there is a hole in between the bones in the head. That means what? There is a hole in between the bones in the head here. Makes sense? So the air, when you breathe in, what happens? The air, it will come and enter inside this hole. It's not it. So when it will enter inside this hole, what happens? The air which comes from outside, they will make it humid. I mean the temperature. They will make the temperature humid. They will make the temperature balanced. They will make the temperature tolerable, so that you will be able to breathe in, so that you will be able to breathe in peacefully, you can say, so that you will be able to breathe in a nice way, in a proper way. So the sinuses, they will help you in that. Understand? मतलब ये जो sinuses है, क्या होता है यहाँ पे, टेम्परेचर जो हम लोग जब सांस लेते हैं, ठीक है, जब सांस लेते हैं, ये जो टेम्परेचर है, मतलब ठीक कर देता है ये सब। हाँ, ताकि हम लोग अच्छे से सहन कर सकें, जो ज्यादा ठंडा भी नहीं, ज्यादा गर्म भी नहीं, ऐसे मतलब मदद करते हैं हम लोग का। ठीक है, इज इट क्लियर? Is it clear now? Yes, ma'am. Yes. Okay. Next is throat. Here you will find throat, or else pharynx also you can say here. And here also same thing. I mean, when the air enters inside the nose, nostrils, it will come to the nasal cavity, and after that it will come to the pharynx, or else throat here. Understand? This one, pharynx, or else throat. So that it will enter into the lungs. Okay, it means the air, it will come out from first nose, mouth, then nostrils, then nasal cavity, then pharynx, also known as throat. तो नेक्स्ट क्या है? थ्रोट या फिर pharynx. तो पहले हवा किसके अंदर घुस गया था? नोज और माउथ, है कि नहीं? उसके बाद नॉस्ट्रिल्स, उसके बाद नेजल कैविटी, उसके बाद pharynx. ये जो pharynx है, इसके बाद हवा अंदर घुस जाएगा. Next is what? Next is larynx. This is larynx. This larynx, they are also known as voice box, from where your voice comes out. Understand? It is also known as voice box. So what Vocal happens? cord, ma'am. Uh-huh.
Vocal cord, that is mean. Vocal cord. You can also say as vocal cord also. But here we will use the term voice box or else larynx. Okay, So, okay. okay, so what happens here? Same thing, just after the pharynx, the air will enter inside the larynx. Understand? It will enter inside the larynx. And this larynx, they helps in what? When you have something, when you eat something, what happens when you chew something and when you swallow it? What will happen? It will enter into the esophagus. You remember, no? In the digestive system we have studied. So the larynx, they will stay away. I mean, they will stay away from whatever you eat, whatever you drink, so that it won't disturb the respiratory system. Understand? It won't disturb the respiratory system. So whatever food you are having or whatever you are drinking, it will go to the esophagus, not here in the larynx. तो नेक्स्ट क्या है लेरिंग्स या फिर वॉइस बॉक्स भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे सेम माउथ और नोज के अंदर हवा घुसेगा, उसके बाद नॉस्ट्रल्स, उसके बाद नेजल कैविटी, उसके बाद क्या, उसके बाद फेरिंग्स, उसके बाद लेरिंग्स, है कि नहीं। हवा ऐसे ऐसे लाइन बाय लाइन अंदर, मतलब स्टेप बाय स्टेप हवा घुसेगा, ठीक है। इट विल स्टेप बाय स्टेप इट विल एंटर, and after that what will happen, it will enter into the larynx। उसके बाद कहाँ पे घुसेगा, larynx। वॉइस बॉक्स भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, जब तुम लोग खाना खाओगे, हम लोगों ने मिला था ना डाइजेस्टिव सिस्टम पे, मतलब ये डिस्टर्ब नहीं करेगा। डाइजेस्टिव सिस्टम अपना पार्ट काम करेंगे और रेस्पिरेटरी सिस्टम अपना पार्ट खुद करेंगे। ये लोग मतलब एक दूसरे को परेशान नहीं करेंगे, ठीक है। इफ यू अंडरस्टैंड एवरीवन, Yeah, ma'am. don't get confused with the respiratory system and the digestive system. Means it will do their own work separately. Understand? When you eat something, what will happen? It won't enter here into the larynx. It will directly go to the esophagus. Understand, no? Yeah, ma'am. Okay. Okay. Next is lower respiratory tract. So in the lower respiratory tract, what are the parts that you will find in the lower respiratory tract? तो नेक्स्ट क्या है, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। तो लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में हम लोगों को क्या मिलेगा, कौन सा पार्ट लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में है। फर्स्ट इज Lungs. lungs, okay, so this is your lungs। next is Trachea. trachea, this is the trachea, it is also known Bronchi. as the windpipe। next is bronchi, this is the bronchi। understand, just they are attached with the lungs, both lungs, they are attached to the lungs, bronchi। next is bronchioles, I'll show you। so this is the bronchioles, they are like small branches, all this, understand। and next is alveoli, so this is alveoli। so these are the parts of lower Can you respiratory repeat me? tract। okay, I'll repeat again। so first you will find the lower respiratory tract is what, the lungs, this is the lungs। you will find two lungs, one, two, the picture is not shown but it is two, you have two lungs, one, two, that's why it's S, lungs। next is trachea, this one, trachea, it is also known as the windpipe because they are just like a pipe, it's not it, so that's why windpipe। next is bronchi, this is bronchi, they lie, where do they lie, in between, I mean, they are attached to the lungs, you can say, this bronchi, this one, bronchi। next is bronchioles, this is the bronchioles, this one, they are like small branches, bronchioles, all these। and next is alveoli, so all these are alveoli, all these small, no? round in shape, so all these are alveoli, if you understand। okay, so now let us see trachea।
So this is trachea. It is also known as windpipe. So the trachea, they are like a passage. I mean, they are like a way, you can say, in between your throat. This is your throat and your lungs. Understand? Means they are like the messenger, or they are like a passage. They are like a way, so that the air will enter. The air will enter through where? Through the throat, this one, and your lungs. अंडरस्टैंड तो ये नेक्स्ट क्या है ट्रेकिया इसको विंड पाइप भी बोल सकते हैं तो ये ट्रेकिया क्या है ये मतलब वे का जैसा है मतलब रास्ता का जैसा है किसके बीच में इन दोनों के बीच में थ्रोट थ्रोट यहाँ पे है कि नहीं थ्रोट और लंग्स के बीच में ये मतलब रास्ता है इन दोनों के बीच में ओके नेक्स्ट इज bronchial tubes so bronchial tubes is here this one so the bronchial tubes they are where they are at the bottom of the windpipe bottom means what at the end so this is the windpipe isn't it so they are both sides this side and this side bronchial tubes this side and this side so the bronchial tubes lie in both sides it is the end part at the end तो ये bronchial tubes कहाँ पे है ये ट्रेकिया है ये मतलब ट्रेकिया के बाद में है मतलब लास्ट में है सबसे लास्ट में है ये bronchial tubes ठीक है bronchial tubes यहाँ पे both sides में मिलेगा राइट साइड और लेफ्ट साइड में दोनों साइड में मिल जाएगा ठीक है और ये दिस bronchial tubes they are connected to each lungs तो ये bronchial tubes है ये दोनों lungs के मतलब ठीक मतलब अटैच है वो लोग एक साथ है ठीक है नेक्स्ट इज lungs so lungs how many do you have two lungs and in the lungs what happens they remove oxygen from the air and they will go into the lungs understand so you have got two lungs what happens here they used to remove oxygen from the air then afterwards where do they go into the blood तो नेक्स्ट क्या है लंग्स हम लोग को दो लंग्स मिलेगा एक दो तो ये दो लंग्स क्या करते हैं ये मतलब ऑक्सीजन को हटा देता है हवा हवा से हटा देता है और कहाँ पे चला जाता है ब्लड के अंदर चला जाता है इज इट क्लियर Yeah, ma'am. ओके नेक्स्ट इज सिस्टम ऑफ रेस्पिरेशन okay so in the system of respiration what we will find your lungs plays an important part in the system of respiration so the lungs what do they used to go and supply oxygen to the organs to all the parts of your body then afterwards with the help of what with the help of your bloodstream with the help of your bloodstream they used to go and supply oxygen understand and as well as your tissues I'll repeat again the lungs they go and supply oxygen to all the parts of your organs as well as your tissues with the help of what with the help of your bloodstream and in the system of respiration what will you find you will find muscles and bones they helps you in respiratory system so in the muscle part what will you find you will find the diaphragm you remember na diaphragm I have showed you in the first slide so the diaphragm they helps in what they are a part of the muscles and the diaphragm what do they helps your lungs so that you can take in oxygen and you can expel out carbon dioxide they helps you in that that is the part of the muscles that is the diaphragm next is ribs ribs is a part of a bone we got na in the this one bones and bones the first class of anatomy bones rib cage so the ribs they helps you in what the ribs they helps you in protecting your heart as well as your lungs how do they protect they protect the heart or else the lungs so that it will remain in the proper place in the exact place where it is where it was so they helps in that तो यहाँ पे क्या होता है सिस्टम ऑफ रेस्पिरेशन में लंग्स
ऑक्सीजन सप्लाई करते हैं। किसको सप्लाई करते हैं? ऑर्गेन्स, हम लोग का जो सारे ऑर्गेन्स हैं और टिश्यूज को सप्लाई करते हैं ब्लड। ठीक है, किसके द्वारा? ब्लड स्ट्रीम। ब्लड स्ट्रीम की मदद से ऐसे मदद करते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे मसल्स और बोन्स एक साथ काम करके मदद करते हैं। मसल्स कहाँ पे मिलेगा? मसल्स हम लोग को डायफ्राम पे मिलता है। ठीक है, मैंने पहले स्लाइड में दिखाया था ना डायफ्राम। तो ये डायफ्राम कैसे मदद करते हैं? ये मतलब जब सांस लेने में और सांस बाहर लेके जाने में ये मदद करते हैं डायफ्राम। ठीक है, और ये जो रिब्स है, ये रिब्स बोन्स के अंदर है। मैंने सिखाया था ना बोन्स एनाटॉमी क्लास में। तो ये रिब्स या रिब केज का काम क्या है? मतलब ये लंग्स और हार्ट को ठीक जगह में रखते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, उसका सुरक्षा करते हैं। ठीक है, यू कैन अंडरस्टैंड एवरीवन? Yeah, ma'am. Sir. ओके, नेक्स्ट वी विल कंटिन्यू। हम लोग कंटिन्यू करेंगे सिस्टम रेस्पिरेशन का। तो नेक्स्ट क्या है? ब्रोंकियल। तो ये ब्रोंकियल है। तो ये जो ब्रोंकियल है, ये दिस इज द ब्रोंकियल। ऑल दिस स्मॉल स्मॉल ब्रांचेस ना, दे आर लाइक ब्रांचेस। तो ये ब्रोंकियल्स है, ये ब्रांचेस के जैसा है। पैर में ब्रांचेस मिलता है ना, तो ये ब्रांचेस के जैसे हैं। तो ये ब्रोंकियल्स मतलब ये ट्यूब का जैसा है। ठीक है, एंड ब्रोंकियल्स के बाद क्या आएगा? एल्वियोलाई। ठीक है, ये एल्वियोलाई है, ब्रोंकियल्स के बाद एल्वियोलाई आता है। ओके, सो what is alveoli? All these alveoli, they are small, they are very small, they are tiny air sac. I mean, air is inside this alveoli, and what happens here? Here, usually exchange of gas happens. Exchange of gas like what? Carbon dioxide and oxygen gas, they exchange. And alveoli are just like a grapes, you can say, means they are all together, and here exchange of gas happens. It is carbon dioxide and oxygen. तो ये नेक्स्ट क्या है? एल्वियोलाई है। ये छोटे छोटे हैं, दिखने में छोटा है। ये अंगूर का जैसा है, ग्रेप्स का जैसा है। ये लोग साथ होता है, खट्टा होता है। और यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे गैस एक्सचेंज होता है। कौन सा गैस? कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस एक्सचेंज होता है। If you understand till here? Yes. Okay, next is capillaries. So this is capillaries. So capillaries, you will find that they are attached with the alveoli. तो ये जो कैपिलरीज है, ये मतलब एल्वियोलाई और कैपिलरीज अटैच है, मतलब stay together, they stay together. And here same thing happens. There is exchange of gas, that is carbon dioxide and oxygen. It occurs here in the capillaries. And they are like blood vessel. They are actually the blood vessel. Understand? They are actually the blood vessel, and they are attached with the alveoli. And here same thing happens, exchange of gas happens, that is oxygen and carbon dioxide. तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे कैपिलरीज है, इसको बोलते हैं कैपिलरीज। तो ये एक्चुअली क्या है? ये लोग ब्लड वेसल्स है। और ये मतलब कहाँ पे मिलेगा? एल्वियोलाई और एल्वियोलाई पे होता है। ये लोग मतलब एक साथ है, एल्वियोलाई और कैपिलरीज एक साथ है। और यहाँ पे क्या मिलेगा? कैपिलरीज में एक्सचेंज ऑफ गैस मिलेगा। ठीक है, एक्सचेंज ऑफ गैस, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन एक्सचेंज होता है यहाँ पे कैपिलरीज। ओके, इज इट क्लियर एवरीवन टिल हियर? Yes, ma'am. Any Yes, ma'am. doubts? No, ma'am. No. No, ma'am. Okay, so we will discuss still here today till capillaries. In the next class, we will see about the lobes. There is lung lobes. It is divided into 3 lobes. All this we will see: pleura,
then cilia, epiglottis, larynx. All this you will see in the next class. So for today, we have discussed still about capillaries. Okay. Okay, then that's all for today's class.